एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी सिंगर सोना महापात्रा, और साथ ही मौजूद है डायरेक्टर शीतल मेनन, और इनका जो गाना है दी बावरी फ्रॉम टैश विच इज डूइंग फिनोमिनल। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड हाउ इज द फीडबैक? Feedback has been good and quite overwhelming actually. मतलब मुझे इससे भी मतलब इस पे भी कुछ सीखने को मिल रहा है कि everybody is reacting very differently to the video. मतलब बहुत ही अलग से वो कनेक्ट कर रहे हैं, जो मैंने उतना सोचा नहीं था when I was trying to kind of you know make this video, but I'm very happy that लोगों को अच्छा लग रहा है and yeah. सोना, फीडबैक बताइए। Divya, I cannot pretend to share any feedback right now. Whenever I do a song, I do it for myself, and if I love it, then that's good enough feedback. And every time I hum it, it gives me a lot of love and joy. And I'm right now, in fact, making an effort in the last few months to completely cut off from feedback. I've cut down my social media time. I'm giving myself a time to completely, in a sense, simple and cliched as it might sound, an artist has to go through a phase of complete cleansing to be able to create in an interesting way again. And I'm gifting myself that. कि लोगों को क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है. गाना बहुत प्यारा है. It is an original song after ages. गाने में बहुत live musicians हैं. शहनाई बजती है, 1 minute लगता है before the vocals start, and I was telling that itself is rare. क्योंकि आजकल प्रेशर हमेशा हर गाने में रहता है कि पहले 15 सेकंड में ही आप वोकल शुरू कर दो, नहीं तो लोगों का जो है ध्यान उड़ जाएगा. एंड आई फाइंड दैट एब्सोल्युटली डिप्रेसिंग. और आई मस्ट वी फॉरगेट कि देयर आर पीपल आउटसाइड ऑफ जस्ट सिंगर्स हु मेक अ सॉन्ग. तो आई मस्ट से कि गोविंद वसंता जो है थाइकोडम ब्रिज के म्यूजिशियन है, बट ही इज ऑल्सो अ कंपोजर. This absolutely wonderful musician who has made this song. Hussain Haidari ने लिखा है, and Farooq Latif Khan, I shouldn't forget. उस्ताद हैं बिल्कुल, उन्होंने शहनाई बजाई है. Important to highlight and underline the names of musicians like Farooq ji. जो Farooq Latif Khan जो हैं, he is amongst the few शहनाई players in fact left playing in the session circuit, and that should make us very worried कि हर गाना जो मेन स्ट्रीम में आजकल प्रोग्रामिंग होके इलेक्ट्रॉनिकली बन जाता है, जो लाइव म्यूजिशियन जो एक फील लाता है and that carries the centuries of your country's heritage, they don't find too many places to express themselves or to even get paid to play. तो डर की बात यह है कि from what I hear, the number of sarangi players in the country are reducing drastically. शहनाई players are on the way out. हमारे जितने इंडिजिनस इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको ज्यादातर स्टेज में भी नजर नहीं आएंगे. कीबोर्ड्स और गिटार हर जन सीखना चाहता था. इट्स वेरी कूल टू बी सीन विद अ कीबोर्ड एंड गिटार, बट व्हेन इट कम्स टू आप शायद कोलकाता में हैं, एम आई राइट? नो, मुंबई, सॉरी, आई गॉट द रॉन्ग मैसेज. तो मैं तो ईस्ट की हूँ, आई एम फ्रॉम ओडिशा. बंगाल में दो तारा हो, देयर आर सो मेनी इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर राइट नाउ फेसिंग एक्सटिंक्शन, एंड समहाउ आई फील ये जो गाना है रे बावरी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर ऑफ द फैक्ट कि जो ओल्ड वर्ल्ड ब्यूटी है हमारे म्यूजिकल फॉर्म्स में, बिकॉज इट्स अ राग बेस्ड सॉन्ग. कर्नाटिक राग है कल्याणी, उसको गोविंद ने बहुत ही अलग तरीके से कंपोज किया है. The words are Hussain Haidari's, and again so it's a perfect amalgamation, and then you have a beautiful shehnai playing, a piano playing, so it's a marriage of the old and the new, Indian and Western. और वीडियो भी जो शीतल ने बनाया, आई थिंक इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक वीडियो. मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि लोकेशंस बहुत ही फैबुलस है, प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लासी है. दिस कुड हैव गॉन लिटिल बिट यहाँ वहाँ, लेकिन जो आपने जो बात की इतने सारे म्यूजिशियंस का जो पूरा मिक्सचर जो आया हुआ है, उसको एक जिस तरह से प्रेजेंट किया वो एक क्लासी वे में ही करते तो बेटर होता, एंड ये किया गया है यहाँ पे, दैट्स व्हाट पीपल आर लाइकिंग अबाउट इट.
It's not only classy, I must add, it's very brave of शीतल, क्योंकि प्रेशर जब हम लोग मुंबई में हैं, प्रेशर यही रहता है कि फास्ट फूड खा लो, immediately उसका एक मजा आता है, let's go for what is easiest to digest, easiest for people to understand and appreciate. And I think she has taken the tougher route. I'll straight up say that. एक तो मैंने शीतल को कहा गाना इतना लंबा है, आजकल 5.5 मिनट का कोई गाना भी नहीं बनाता है. मेरे जितने 2 मिनट के गाने बनते हैं जिंगल की तरह. आप एक दिन में कैसे शूट कर पाओगे? तो वो बहुत ही ज्यादा, और दिस इज माय फर्स्ट वीडियो दैट आई एम डायरेक्टिंग, तो इतना आइडिया भी नहीं था कि हाउ टू काइंड ऑफ प्लान दिस होल थिंग, एंड आई होप इट comes together and मुझे उतना footage मिले to kind of make this video. But challenge शुरू में जो challenge था कि इतना बड़ा song 5 minutes, but first time when I heard the song, मेरे लिए जो what I felt, and if I said yes to the song, it was the whole song that I heard. तो जब मैं 10 बार सुन के अगर मैं इतना connect हुई थी उससे, तो when Sona also said, कि let's just trim it, because वो possible ही नहीं होगा कि एक दिन में आप कितना cover कर पाओगे. तो मेरे लिए ऐसा था कि I couldn't cut the song short. And as a listener, I'm just a listener, but the people who have created it, Govind, Vasanta, and they've created, like how brutal it is, but then you have to take such a tough call. मैंने कहा कि in my head, actually, I didn't talk to Sona about it, कि I will not shoot this video because I don't want to touch it. I don't want to touch this, because it is the beautiful Shehnai to, how it's ending with Sona's alap. Sona is herself is saying, cut my alap. I said, Sona, how can you talk? I can't cut your alap. It's just for me, it's the, highlight of the song when her alap starts, and for it just, gave me goosebumps. So, बहुत ही critical for me to, go with that, and पता नहीं बहुत गलती भी हो जाएगी along the way, but to take that risk, and I don't know, I think people will just slap me on my say क्या किया तुमने, but I think वो थोड़ा, and knowing the kind of person I am with a lot of unsurety always, I just question so much, but Sona was just unbelievably supportive right from the beginning, and she said, listen, you will do this and you will do it well. She was like the like a teacher there. Teacher. And, really, I mean, I already have a very stern image. Let's not worsen it right now. But that is going by social media. Also celebrates womanhood, it like जो last में जिस तरह से जो shoot पूरा किया है, वो पूरा shot है, entire thing when going from this thing round में, it's like literally as you said, she is going with her alap is going, और वो जो visual है वो बहुत कमाल का लगता है. Please उसके बारे में कुछ बताइए. तो मेरे लिए वो आलाप वही बात होती है कि जब आप गाना सुन के जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो it was doing something to my system जो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही थी. तो मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट था टू शूट अ सर्टेन वे टू फील व्हाट आई एम फीलिंग, वो कन्वे हो पाए. तो अनदर बिगेस्ट थिंग कॉल वाज टू, जहाँ जिस लोकेशन में हम शूट कर रहे थे, टू इट्स अ बिग हवेली, इट्स अ शूटिंग लोकेशन ओनली, but they have a beautiful massive chandelier right in the center of this space. So I said, let's just have like a rain inside the Haveli. To plan all that, मतलब क्या कर रहे हैं एक दिन में, how will we achieve it? So in my head, with my DOP was also Vikas Vasudevan, young guy, brilliant, very talented, and he, when we discussed about it, कि climax में ऐसे ही करना है, कि we will have water, we'll have rain inside. Actually, we wanted to bring in a lot of elements of concept when we were discussing a lot of elements of fire, water, fire elements. Okay, I wanted to kind of, but ठीक है, मतलब वो भी था प्लान शूट करने का, the whole fire element and all, because it was all, but वो हो नहीं पाया. But this was very tricky to execute for the kind of lack of time we had, because वो आखिरी में ही रखा था that whole thing, and by the time we were also losing light, and पता नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं, but वो somehow it sort of
it happened, we really struggled with that. We struggled because subah ka call time tha. People had woken up at, like at 3 a.m. Sona coming for the shoot, and in her whole makeup, costume, whole day she's been like walking in that heat. It was very hot, and we are continuing shooting, but we want them to look also all dreamy and beautiful, Hmm. but it was, it was quite a struggle. But not even once did she say, matlab, she was just all there. I'm here. I'm not even going back to my vanity. I'm going to sit here at the location because we are, losing time. I don't want you to waste time. She was like so cooperative. I can't. I'm like, I really, you know, I'm so thankful to What Sheetal doesn't know or should know persons. is that It's like I've how spent much my they all help to make this happen. It's never a one person's, like they Right. put in so much of themselves into this. I'm so thankful. It's really that, it's everybody. And they, like, Sona is such a star. For me, I was very nervous shooting Sona, directing her. Like, how will I call the shot and tell Sona to, I had so many jitters, about karke main kaise karungi. But I think she But was. Sheetal, you mentioned that the entire dreamy look of Sona, that red attire, what she is wearing, she was looking fabulous. I think the fire element was balanced by her out there. तो सोना कैसा लगा अपने आप को देख के इतना इतने बहुत ही कमाल के लग रहे थे. I'm a performing artist, so I am very hedonistic that way. And while मैंने आज ही एक morning में एक post डाला कि every time people take a, I've gone for a photo shoot, people say कि left better है या right better है, कौन सा profile आपका better है. I have never known because, and I've never cared to know, क्योंकि I go on stage and say big belly, big voice. So I'm not one of those standard, just to cut a long meandering story short, I am not caught up with the idea of only looking good. I take that for granted almost, ki if the voice and my song is in place, the simplest thing is to the other side of it. In fact, I will be much more conscious in a recording studio कि सुर अच्छा लगना चाहिए. I should be able to convey an emotion which is much more complicated. I should be able to do something new with this song or tell a story which moves people for a lifetime. So there I would be very considered in all the choices. But when it comes to shooting a video, honestly, fortunately, I am not caught up with the vanity of how I look. Maybe because I'm blessed with the fact that I've grown up thinking that looks are very secondary. I've been made to believe that it is, it is a secondary thing. And the fact that there are experts around you, Karishma, who was doing the makeup, has dressed up some of the prettiest actors around the world, industry. The stylists are there. And for a change, there is this whole team. कोई styling कर रहा है, कोई बाल बना रहा है, कोई makeup कर रहा है, एक vanity van है. I've been an independent artist all my life. मैंने 2020 में ही अपने 8 म्यूजिक वीडियो और गाने रिलीज किए विदाउट अ लेबल, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी क्रू, वेयर इन द मोस्ट to retain your independent voice, to be able to say exactly what you say and what you stand for, you have to put out music on your own to survive. I've done that for a decade. So as a result, I felt it was a privilege to be on Sheetal and Bijoy's set. It was one of the most swanky sets with a vanity van and air conditioning and a crew and everybody taking care of me, watching over me, because I'm used to being my own line producer, my own artist, sometimes doing my own hair and makeup. I've done that, and I've also had the joy of being a diva. जब मैं live shows में perform करने जाती हूँ, I perform to lakhs of people, 15-member crew. I have my own makeup and hair. I have my own light engineer. I have my own sound engineer. I have a whole band. I have a manager, a team of 3 who take care of me, somebody who's doing social media. So that is when I'm in a different avatar altogether. I feel like I'm a queen. But then I can completely transform into being, I can literally be the gopher. How do you say it? I can transform into even doing that. So I really enjoyed myself on the set because for a change, I was not being worried about
are we going overtime? I mean, I was on their behalf because they're my friends. कि भाई आपका ज्यादा खर्चा नहीं हो जाना चाहिए कि we go overtime, this and that, because such videos are complicated and tricky when you're pulling it off in a day. Sheetal was stubborn about wanting to shoot 5.5 minutes, not 5 minutes, let me say. And my experience over the decade has been that one day one should attempt to probably not go more than 3 minutes of a song, because that's when you get footage of a certain kind. It's easier to edit. But she broke all those rules, and that was wonderful, because I feel I think it was yesterday when I wrote a message to Sheetal saying sorry to her, saying, sorry Sheetal, I was a naysayer telling her कि गाना का छोटा करो, आजकल किसी का ध्यान नहीं रहता है, एक मिनट का शहनाई बज रहा है तो कोई मेरे आवाज तक रुकेगा भी नहीं. But at the end of the day, it's interesting when artists are artists. People stick by what they believe in. Bijoy believed in my voice. He insisted that he release the song in my voice. Sheetal insisted that she shoot the whole 5.5 minutes in a video. And here I am feeling like very special. Well, जो भी हो, the end result तो बहुत ही कमाल का है वो, and as they say, whatever ends best, वही वाली बात होती है. कुछ फैंस सोना आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी इतनी कमाल की आवाज है, तो एक शिकायत है उनकी कि गानों में थोड़े सिलेक्टिव क्यों हैं आप? Actually, मैं इतनी सिलेक्टिव नहीं हूँ. Anyway, one should only sing songs that you are suited to sing. हर गाना, अगर मुझे बहुत बार लोगों ने बुला के डुएट, एक फिल्म का डुएट है, उसके लिए बुलाया था, and I have had this experience 3 times already in the last 5 years. रोमांटिक डुएट है, लेकिन मुखड़ा अंतरा अरिजीत के आवाज में आ रहा है ना. अरिजीत इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, कोई मना नहीं कर रहा है कि ही इज ऑसम. ही इज लाइक द बिगेस्ट फाइंड आई थिंक सिंस किशोर कुमार इन आवर इंडस्ट्री. But having said that, when it's a romantic song and you are getting to sing only the final 4 lines of the song, it begs the question कि रोमांस आदमी खुद के साथ कर रहा है क्या? तो इतने सारे गाने ऐसे हैं आजकल, 10 सालों में ऐसे हो गया है अपना इंडस्ट्री. इट इज सो टेस्टोस्टेरोन हेवी कि all solo songs are made for men. All duets are also mostly dominated by men. Women only sing the choruses. और जितने कम बचे कुछ गाने रहते हैं, वो इतने सारे अच्छे फीमेल आर्टिस्ट से बढ़ जाते हैं, तो हम सबको बहुत ही कम गानों का मौका मिलता है. So it's not so much about honestly me being selective, it's also the other way around. I think the industry has not been doing justice to female artists for a long time now, and it's their loss. Honestly, it's the loss of the radio waves. It's a loss of diversity in our art public space. And how do I counter that? I can't sit and complain and cry. मैं उन आर्टिस्ट और ऐसे औरतों या आर्टिस्ट में से हूँ, because I don't see it as a gender. ये इशू है. अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो you are blind. मैं क्या कर सकती हूँ? I can put out my own music. I do that regularly. Only unfortunately, when you put out your own music, it does not have the might and the promotion of the millions to get millions of views. तो टाइम लगता है, लेकिन गाने जो अच्छे गाने होते हैं वो they reach audiences finally. 3 साल पहले मैंने गाना घने बदरा डाला था during the monsoons. तब तो हमें लगा था कि भाई 5 लाख व्यूज भी नहीं आ रहे और हम लोग पैसे डाल के कभी व्यूज लेते नहीं है, तो दिल को दर्द भी होता है कितनी मुश्किल से वीडियो बनाया, गाना बनाया, इतने पैसे डाले अपने, बट कौन सुन रहा है. बट अभी 3 साल बाद ड्यूरिंग द पैंडेमिक सडनली कहीं पे भी जाओ लोग, मैं यहाँ पे गोवा में थी, आई वाज फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, एयरपोर्ट में वन समबडी विद अ गिटार सिंग, मैं दिन रात घने बदरा बजाती हूँ. तो मुझे लगता है कि ये रे बावरी का जो गाना है फॉर्चुनेटली हैज द लेग्स टू स्टैंड ऑन. फिल्म के साथ एसोसिएशन है. It is with a great platform like Z5, which is promoting it. At the same time, it's a brave choice of a song given for the director. गाना ऐसे कोई हड़बड़ी में नहीं है, फुर्सत से गाना आता है और राग बेस्ड है, क्लासिकल बेस्ड है, शहनाई बज रहा है. तो by all normal rules, one would say कि Bijoy is mad. कि वो life is as it is tough for him as a filmmaker who is doing unusual films. उसके ऊपर गाने भी वो इतने unusual choose करता है. But at the end of the day, मुझे लगता है कि जितने genuine artists हों, filmmakers हों, I think they are working towards creating a worthwhile legacy to leave behind. कि हम जो भी काम करें, it should represent us totally and not just for getting quick results.
So at the end of the day, when we move on to the other world, we feel proud of the life we lived and the work that we did. Agree. तो मेरा तो ये हमेशा वो ही फंडा रहा है कि मैं कुछ भी करूं. अभी मैं इतने साल हो गए, लेकिन साउथ इंडिया भी जाऊं जहाँ पे वहां पे भी I cannot escape singing Rangavati. It's a Sambalpuri Odia song. It's not even a film song, but it has reached everywhere. Hey Rangavati, re Rangavati, ho Rangavati, 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 Rangavati kana kalata, हंसी पदे को होलो कथा. तो शीतल के लिए गा रही हूँ मैं, बिकॉज़ शीतल इज द रंगवती ब्यूटीफुल वुमन हियर. ये फोक सॉन्ग है, स्कूल में सुना था, लाइक यू नो, सो स्कूल में पीपल यूज्ड टू हैव हमारे वो कल्चरल प्रोग्राम में, एंड द नेक्स्ट थिंग आई हर्ड सोना सिंगिंग दिस ऑन स्टेज. मतलब मैं तो ऐसे स्टेज तो चाहे ये हो, सो लैंग्वेज इज नो बैरियर, यू नो, फॉर म्यूजिक. पंजाब में जाऊं तो कोई बोलता है रंगवती गाओ, यहाँ पे जाऊं तो कोई बोलता है अंबरसरिया गाओ, साउथ इंडिया में विच इज अ पंजाबी बेस्ड सॉन्ग. सो आई फील म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज. और मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, यू नो, आई लव फोक म्यूजिक, आई हैव अ सर्टेन टेक्सचर इन माय वॉइस, मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ. आई फील प्राउड वेयरिंग इट ऑन माय. ये नहीं कि ट्रेंड ये है कि हिप हॉप का ट्रेंड है तो मैं भी 4 लाइन रैप के गा लूं. I don't think I'm supposed to sing rap just to fit into the fashion of things, you know. And I have never fit into the fashion of anything. And somehow audience has been kind. बहुत प्यार मिलता है और you last out longer, I feel. लंबे रेस का घोड़ा अगर बनना हो, be true to yourself. I think Ray Babri represents me very beautifully. And इतने साल लगे विजय के साथ collaboration करने में, उसके फिल्म में गाने में, and I think it was well worth the wait. क्योंकि यू नो रिसेंटली मुझे एक सुपरस्टार सिंगर है, नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ. शी गेव दिस पीस ऑफ एडवाइस कि वैसे तो रियाज मैं भी करती हूँ क्लासिकल में, क्योंकि सुर लगाने के लिए तो हमारी ट्रेनिंग क्लासिकल की है, लेकिन आई नेवर पुट इट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज इट विल मेस विथ माई कूल फैक्टर. क्योंकि she thinks young people will think her to be uncool because she is. और मैं तो बहुत ही गर्व से अपनी, अगर मैंने बैठ के, मुझे अभी टाइम मिला आफ्टर मेनी इयर्स कि मैं हर दिन थोड़ा यू नो नए राग सीखूं. कलावती पे अभी मैं कल बैठी हुई थी, 2 दिन पहले राग सरस्वती पे बैठी हुई थी. एंड टू थिंक youngsters who are actually listening to streaming platform जहाँ पे म्यूजिक नया रिलीज होता है, they are all above below 27. 80% of them are below 27. To cater to them, I have smart friends like this friend who advised me कि सोना तू ना ये tech, you know, you're talking about handlooms and ikkat and well-meaning था advice, और ये classical music, ये ना it will make you uncool. And I was thinking, man, that will make me cool for decades and decades. आपको क्या पता, आप आओगे जाओगे 5 साल में, you might be the most trending artist right now. But watch my words, I'll be around when I'm 80 and I will be celebrated. मैं बहुत immodest हूँ कि मैं ऐसे dreams लेके बैठी हूँ, लेकिन I believe कि even when I'm 80 I'll be cool because India celebrates timeless music and timeless creators. More best wishes for superb views and you know, hoping to see you back again, both of you collaborating and giving us some fantastic more videos. I think next project Sheetal is going to dance, I'm going to direct. Sheetal is also a fantastic classical dancer. She is a classical dancer, yes, of course. And an actor, and she's a performing artist, so I have the deepest regards for her, you know. So Sheetal, maybe that's going to be a future project collaboration. Yeah. चलिए उसी नोट पे thank you so much and stay safe. Thank you so much. Thank you so much. Take care.